Okay, so hello everyone. My name is Kunal and I'm your mathematics tutor. And actually, we are doing probability. And today is our fourth lecture on probability. So let me recap you something कि हमने अभी तक क्या क्या चीजें cover कर चुके हैं. So today our fourth lecture and let me recap the things कि हमने क्या क्या चीजें cover करी हैं. So the first thing we will covered is we had covered is the theme of chapter, and then after we will discuss about some definitions like events क्या होते हैं and all, and then we will deal with some coin flip problem, dice problem and cards. जितने भी देखे थे हमने क्या देखे थे फेयर गेम के बारे में हमने डिस्कस करी थी. सो आज का जो चैप्टर जो अपने का होगा वो होगा ऐसा कुछ अपन पहले कुछ डेफिनेशंस पे बात कर रहे होंगे and then we will go through some problem based on playing cards क्योंकि हमने वो कवर नहीं कर रखा है. Let me start with some definitions. So our first definitions is something like called as complementary events. Complementary events. So basically two events are said to be complementary. Two events are said to be complementary events if the occurrence of one is same as the non-occurrence of other event. If the occurrence of one is same as non-occurrence of, so this is the thing, like what I'm trying to say is कि देखो let me first tell you one thing कि एक का होना दूसरे के ना होने के इक्वल हो. जैसे what I'm trying to say is कि let's take an example of a flipped coin. फ्लिपिंग अ कॉइन. तो अगर अपन एक कॉइन को फ्लिप करते हैं तो क्या होता है कि या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा. तो इफ आई टेल अबाउट द व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड, तो क्या आएगी 1/2. एंड हेड का आना एंड टेल की ना आना दोनों एक ही इवेंट है ना. व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि इफ हेड्स कम एंड टेल्स डजंट, तो एक का होना दूसरे के ना होने के बराबर हो उसको कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट. ओके, सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि बेसिकली एक एक का होना दूसरे के ना होने के इक्वल हो. अगर हेड आ रहा है मतलब टेल नहीं आ रहा है. एंड द कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट यही होती है कि दो इवेंट्स आर सेड टू बी कॉम्प्लीमेंट्री इफ द अकरेंस ऑफ वन इज सेम एज द नॉन अकरेंस ऑफ अदर. एक का होना दूसरे के ना होने के इक्वल हो. अगर हेड आ रहा है, अगर मैंने कॉइन को टॉस किया और हेड आ रहा है तो टेल नहीं आ सकता है. उस इवेंट में टेल नहीं आ सकता है. अगर मैंने कॉइन को टॉस करा और इवेंट की रिजल्ट हेड है, दैट मीन्स टेल नहीं आ सकता है. ओके, सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू सी बेसिकली व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि अगर एक इवेंट का होना उस इवेंट के ना होने के इक्वल है, किसी और इवेंट के ना होने के इक्वल है, प्रोबेबिलिटी सेम है दोनों की, देन दैट विल बी द कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट. दैट मीन्स व्हेन वी फ्लिप अ कॉइन, heads occurrence of head and tail were actually complementary event. Why do I say that? Because the probability of occurrence of head is same as probability of not occurrence of tail. देखो, कॉइन को अगर मैं टॉस कर रहा हूं तो या तो हेड, एक कॉइन को टॉस कर रहे हैं तो या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा. और दोनों की जो प्रोबेबिलिटी है वो कितनी है, 50-50 चांसेस है. दैट मीन्स प्रोबेबिलिटी हाफ हाफ है. तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि प्रोबेबिलिटी ऑफ occurrence of head is equal to probability of not ना हेड के आने के प्रोबेबिलिटी के इक्वल है. या फिर सीधा भाषा में ऐसा कहूं कि एक का होना, एक इवेंट का होना दूसरे इवेंट के ना होने के बराबर है. लेट मी रीफ्रेज माय सेंटेंस. एक इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी दूसरे इवेंट की ना होने की प्रोबेबिलिटी के इक्वल है. सो दैट इवेंट विल बी कॉल्ड एज कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट.
लेट मी रिकॉल इट थ्रू एन एग्जाम्पल. हेड का होना, प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ हेड is equal to probability of not occurrence of tail. That means probability head आने का probability tail के ना आने के बराबर है और वो इक्वल है 1/2. So that events will be known as कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट. तो आपको बस एक लाइन याद रखनी है इस पूरे कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स के डेफिनेशन के तौर पे कि एक इवेंट प्रोबेबिलिटी, एक इवेंट के होने का प्रोबेबिलिटी अगर दूसरे इवेंट के ना होने के प्रोबेबिलिटी के बराबर हो, सो दैट इवेंट विल बी कॉल्ड एज कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट. सो बस आपको यही चीजें ध्यान में रखनी होंगी. सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द सम थ्योरी पार्ट, देन वी विल डील विद सम एग्जांपल एज वेल. सो कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट की थ्योरी यही है कि एक इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी दूसरे इवेंट की ना होने की प्रोबेबिलिटी के इक्वल हो, देन दैट case we will called as complementary event. And basic example क्या है? If a flipped a coin, so head के आने की probability tail के ना आने के probability के equal है, so that will be an complementary event. So let me denote it something. So the complementary events of E is denoted by, कैसे डिनोट करते हैं कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट को? तो इट विल बी डिनोटेड बाय समथिंग लाइक दैट, और ई डैश और ई टू दी सबस्क्रिप्ट ऑफ सी. तो एक्चुअली कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स को भी डोनेट करते हैं कुछ इस तरीके से, ई बार ई प्राइम या फिर ई सबस्क्रिप्ट ऑफ सी. ओके, सो नाउ लेट मी राइट इट हियर. ई जो है वो है अकरेंस ऑफ इवेंट ई, अकरेंस ऑफ इवेंट ई, एंड ई प्राइम जो है वो है नॉन अकरेंस ऑफ इवेंट पी, नॉन अकरेंस ऑफ इवेंट. तो मैं ये बोला था कि एक का होना ना होने के इक्वल है, सो दैट विल बी दी कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट. सो दैट मीन्स कि देखो यहाँ पे क्या पता चला कि होने और ना होने की प्रोबेबिलिटी अगर अपन जोड़ देते हैं, नहीं होने और ना होने की जितने भी सैंपल स्पेस उसको जोड़ देते तो क्या आएगा हमारे पास? टोटल सैंपल स्पेस आएगा ना. एंड दीज आर दी सम नोटेड पॉइंट दैट यू हैव टू बी इन माइंड. एंड द सेकेंड थिंग इज की प्रोबेबिलिटी होने का प्लस प्रोबेबिलिटी ना होने का इज इक्वल टू 1. ई ई प्राइम डिनोट्स द नॉन अकरेंस ऑफ द इवेंट ई, एंड ई डिनोट्स द अकरेंस ऑफ द इवेंट, मतलब ई के होने का और ई के ना होने का. तो बेसिक एग्जांपल यही था जो मैं आपको बता रहा था कि एक का होना दूसरे के ना होने के इक्वल है, so that event will be called as कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट. बेसिकली कॉम्प्लीमेंट जो वर्ड है ना, एक दूसरे का, कॉम्प्लीमेंट का हिंदी होता है पूरक, एक दूसरे का ठीक उल्टा. एक का होना दूसरे के ना होने के इक्वल है. सो अगर प्रोबेबिलिटी होने का और ना होने का इक्वल है, सो दैट विल बी कॉल्ड एज कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट. जैसे हेड का होना टेल के ना होने के इक्वल है, या फिर हेड का होना हेड के ना होने के भी इक्वल है. We can also say that ki the look at here, probability of occurrence of head is 1/2, probability of occurrence of tail is also 1/2. So head के होने का probability, इस स्टेटमेंट क्या क्या बोल रही है? फर्स्ट डिफाइन दिस स्टेटमेंट. इफ आई टेल यू कि इस यहाँ पे जो जो भी लिखा हुआ है इसको डिफाइन करो, तो पहली डेफिनेशन क्या आएगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ हेड इज 1/2. इसी को एक और तरीके से क्या लिख सकते हैं? प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन अकरेंस ऑफ टेल इज 1/2. इसको ये भी तो कह सकते हैं ना कि टेल के नहीं आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 है ना. और क्या कह सकते हैं? और कह सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ और क्या कह सकते हैं? प्रोबेबिलिटी ऑफ, नहीं और नहीं कुछ कह सकते. इसको फिर क्या कह सकते हैं? प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ टेल, या फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन अकरेंस ऑफ हेड, है ना. तो ये चीज कही जा सकती है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन अकरेंस ऑफ टेल एंड ऑल. तो हेड के आने का एंड टेल के आने की प्रोबेबिलिटी इक्वल है, तो दैट्स द कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट. सो ये एक बेसिक डेफिनेशन था. तो आई थिंक इसको डेफिनेशंस पार्ट में आपने रखनी होगी. सो दिस इज द थिंग दैट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. Okay, now let's move on to the next part, which is the next definitions as
ऑड्स इन फेवर ऑफ इवेंट ई एंड ऑड्स इन अगेंस्ट, है ना, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो पहला फिर से डेफिनेशन है विच इज लाइक odds in favor of event E, and the next thing is odds against on event E। पहले तो ये स्टेटमेंट क्या क्या बोल रही है, इसको पहले आपको समझनी होगी, ठीक है, कि ये स्टेटमेंट क्या क्या बोल दिया। आई डेंट गेट दैट। द थिंग्स इज कि odds in favor and odds against, है ना। देखो, चीजों को ऐसा समझते हैं कि लाइक अगर लेट अस सपोज दैट आई एम प्लेइंग अ गेम, ठीक है, अगर मान लो कि कोई गेम हो रहा है, लेट अस सपोज दैट क्रिकेट मैच हो रहा बिटवीन टीम ए एंड टीम बी। तो आपने ये चीज देखा होगा कि कमेंटेटर्स क्या बोल रहे होते हैं कि लेट अस सपोज दैट लेट मी मेक इट हियर अ टीम, एंड let us suppose we have a player like Sachin, Virat, uh, Yuvraj, Dhoni, Jahir Khan, and Bumrah, है ना, and Bhuvi, Jadeja in our squad. And the next team is something like gully cricket team. Okay. तो इन दोनों के बीच अगर मैच हो रहा है, मान लो हो रहा है, तो कमेंटेटर्स यूज टू से दैट कि अगर मान लो कोई प्लेयर, इम्पैक्ट प्लेयर अभी बैटिंग कर रहा होता तो बोलता है अभी भी जीतने की चांसेस हैं, इतनी परसेंट जीतने की चांसेस हैं। अगर वो प्लेयर आउट हो जाता है देन वी विल सेड कि चीजें अगेंस्ट हो रही हैं, सिचुएशन अगेंस्ट हो रही हैं। या फिर जनरल अगर टर्म में ऐसा समझाऊं तो अगर अ, कोई मैच अगर होम स्टेट में खेली जा रही होती हैं तो कहते हैं कि चीजें इनको फेवर कर रही हैं, पिच फेवर कर रहा है। और अगर टीम इंडिया अगर कहीं आउट ऑफ स्टेशन जाती है मैच खेलने, मतलब इंटरनेशनल पिचेस पे खेलती है, सो इट विल बी लाइक सिचुएशंस अगेंस्ट हैं, वहां पे बाउंस हो रही हैं, ये वो की बातें कमेंटेटर कर रहे होते हैं। नॉर्मल लाइफ में मैं कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ इन दोनों टर्म को, ऑड्स इन फेवर एंड ऑड्स अगेंस्ट पे, ठीक है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि जैसे अगर कोई भी इवेंट होता है तो उसमें कोई चीज आपको सपोर्ट कर रही होती है। जैसे अगर यही मैच लेट अस सपोज टीम ऑस्ट्रेलिया के बीच हो रही है, तो अगर यही मैच अगर इंडिया में हो रहा होता तो द सिचुएशंस, द कंडीशंस फेवर टू इंडियन मोर, राइट। अगर ये मैच टीम इंडिया वर्सेस टीम ऑस्ट्रेलिया इंडिया में हो रही होती, देन there is some conditions like it's maybe the weather conditions, it may be the pitch conditions, it may be the climate conditions supports Indian more than Australian, है ना। तो कुछ चीजें मैच में टीम इंडिया को फेवर कर रही हैं, बट एज टीम इंडिया मूव टू ऑस्ट्रेलिया टू प्ले अ मैच, आउट ऑफ स्टेशन मैच चल रहा, ठीक है, लाइक लेट्स स्टेट दैट सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में मैच चल रहा। तो वहां पे क्या है कि for Team India, climates were different, situations were different, weather were different, and pitch were different, है ना। चीजें अलग हैं, तो वहां पे जो भी चीजें हैं वहां पे नॉर्मल केस को जो है ना अगेंस्ट कर रही हैं। जिस स्टेट से आप बाहर आए हो ना उस स्टेट को अगेंस्ट कर रहा। सो दैट्स व्हाई इट्स ऑड्स अगेंस्ट ऑन डिवेन। तो कुछ चीजें ओवरऑल अगर इसको मैं समराइज करूं तो कुछ इस तरीके से मैं करूंगा कि अगर आप कोई काम कर रहे हो तो उसमें कुछ चीज आपको सपोर्ट कर रहा होता है एंड कुछ चीज आपको अगेंस्ट चीजें कर रही होती हैं, है ना। लाइक इफ यू राइड अ बाइक एंड यू गिव द एक्सेलरेटर टू द बाइक, सो वो उसको स्पीड गेन करने में, स्पीड गेन पे बात करते हैं, तो स्पीड गेन करने में फेवर कर रहा as long as you giving the bike accelerator, speed gain favoring, but as you put the brake, so the speed decreases, so that against the speed gain, है ना, that's called as speed। Basically if you apply the brake, so that's
our speed reduces, so that's against the इवेंट. अपनी इवेंट क्या थी कि हमें स्पीड को इंक्रीज करना था. सो इफ एज लॉन्ग एज आई एक्सेलरेट द एक्सेलरेटर, our speed gain, that's favor my situation, that's favor my events, because मेरे को स्पीड्स को बढ़ाने थे. बट जैसे ही सामने कोई आ गया, आई पुट अ ब्रेक, मैंने ब्रेक को अप्लाई किया. तो जैसे ही मैंने ब्रेक अप्लाई किया, इट्स अगेंस्ट माय इवेंट, बिकॉज माय इवेंट इज टू इंक्रीज माय स्पीड, नॉट डिक्रीज. बट कुछ चीजें इंक्रीज करी, कुछ चीजें डिक्रीज करी. सो दिस इज द एक्चुअली बेसिक थीम ऑफ this both definitions, which is odd in favor and odds against. So what I'm trying to say here is, let me try to write it here. So the first thing is ki odds in favor of event E is actually defined as, कैसे defined है? Defined होता है number of favorable outcome, number of favorable outcome divided by number of unfavorable, which is actually equal to an E by an E dash. मतलब एक के होने का और एक के ना होने का, which is actually equal to probability होने का by probability ना होने का, जो कि मैंने पहले ही कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट में डिफाइन कर चुका हूँ. So this is actually the definition of odds in favor. Okay. So what's in odds in favor term? So the odds in favor term explains that the number of favorable outcome divided by number of unfavorable outcome, which is actually equal to the NE by NE dash, which is actually the probability of happening by probability of not happening. So this is the thing that you have to actually keep in mind. And let me define the second term, which is actually is equal to odds in against, odds against of. So whenever we talk about the odds against, so what I'm trying to do here is, it is defined as number of unfavorable outcome divided by number of favorable outcome, which is actually equal to NE dash by NE, and which is actually equal to probability of not happening or non-occurrence by probability of occurrence. So these are the two things that you have to keep in mind while solving these kind of things. Okay, so I hope this will be clear to all of you. So what I'm trying to say is, so these things were clear कि odd in favors क्या होती हैं, odds against क्या होते हैं ना. तो let me clear it as well कि odds in favor जब भी रहे, तो probability होने का by probability ना होने का. odds against जब भी बोल दे किसी इवेंट को लेके, तो उस इवेंट की प्रोबेबिलिटी ना होने का बाई उस इवेंट की प्रोबेबिलिटी होने का. So this is actually defined the term which is odds in favor of event A, and the second is and the second is odds against of event A. So you all have to keep these thing in mind what I'm trying to say. So these are the terms which all look forward. Now uh, actually what I'm trying to say is ki let's start some actually try to solve some problems. So it will be something like wait, I have to take some problem here. It will be something like, so let's take a problem based on so our first question is something look like if probability of occurrence of E is 3 by 7, then you have to actually find odds in favor and against. बस आपके पास यही चीजें दी हुई हैं and you have to find. Okay, तो देखो यहाँ पे. So my suggestion is to pause the video and try to solve it by own because ये problems easy हैं, है ना, कुछ ज्यादा सोचनी वगैरह है ही नहीं. So we can do one thing as well कि let me tell you one thing कि कुछ ऐसा कर सकते हैं. Okay, okay, we can do this thing. Okay, so
लेट अस सपोज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर इज कि अपन को फाइंड करना है, पहला क्या फाइंड करना है, ऑड्स इन फेवर. So odds in favor is actually equal to probability of occurrence by probability of non-occurrence. है ना? So we can write it as like probability of occurrence by 1 minus probability of occurrence. Because we all know that the probability of occurrence plus probability of non-occurrence is equal to 1. Is it valid or not valid? It is valid actually. Probability of occurrence of E plus probability of non-occurrence of E is equal to 1. So it will be actually equal to 3 by 7 plus 1 minus 3 by 7. So it will be equal to 3 by 7 by 4 by 7. So it will be equal to 3 by 4. That means कि 75%, oh, 75% things favors you. है ना, 3 by 4 into 100. है ना, 75% situations favors you. Okay. And the next thing is like odd against. Is it valid or not? We can say that in some language, but it's not valid because sometimes it will be greater than 1 as well. So you have to take it in a clear way. So now on what I'm trying to do here is I have to find the odds against. So the second problem is like we have to find odd against the situation. So which is actually equal to probability of non-occurrence by probability of occurrence. तो अभी हमने फाइंड करा है odds in favor, so it will be equal to 1 by odds in favor. So it will be equal to 4 by 3. I think this will be clear to all of you. है ना? Now the next question is something like question 2 is like here's something given if odds against of E is equal to 3 by 5. Odds against of E is equal to 3 by 5. Find probability of E. Look at here, we have to find this. तो odds against दिया हुआ है and हमें find करनी है probability of E. So what is the way to solve this kind of problem? So we can do one thing. Let me try to show you in something like that is okay. So in that way, we can also look like okay. So let me start solving it. So we can do one thing. Okay, look at here. The odds against it will be odds against की जो form होती है वो क्या होती है? Probability of non-occurrence by probability of occurrence. And we can write probability of non-occurrence as 1 minus probability of occurrence. We can write probability of non-occurrence by probability of and now what I'm trying to say here is कि we can do one more thing is just try to write it here. So it will be given like 3 by 5 probability of non-occurrence of E is actually equal to 1 minus probability of E by probability of E. So let's try to solve. So it will be like 3 times probability of occurrence minus 5 times of probability of occurrence of it. So when we solve this, what we will get? Take that on left side. 8 times of probability of occurrence of event B will be 5. Probability of occurrence of event will be 5 by 8. So this is the thing that you have to keep in mind. Okay. So I hope this thing will be clear to you. What I'm trying to. So अपन को I think probability of happening of event यही बताना था. जो हमने कर दिया. Now let's move on to the next problem as well. So our next problem is something look like based on card. Okay. If a card is drawn from a pack of 52 cards, then find the odds in favor
then find the odds in favor of event that drawn card is. So let me again tell you something about you all guys are familiar with the playing cards. I think मैंने बताया था there will be two parts like red and black, and there will be red में क्या बोलते हैं heart and diamond, and then यहाँ पे spades and club, and there will be each one has 13 cards, which is actually equal to king, queen, jack, 10, किंग क्वीन जैक इक्का 10 9 8 7 6 5 4 3 2, यही सारी कार्ड्स होती है। तो हर एक के पास क्या क्या होती है, एक एक वो होता है, किंग होता है, इसके पास भी एक किंग होगा, इसके पास भी एक किंग होगा, इसके पास भी एक किंग होगा, इसके पास भी, मतलब टोटल 4 किंग्स प्रेजेंट होती है। तो किंग के होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, 4/52, बिकॉज टोटल कितने कार्ड्स है 52, सो 1/13। सो किंग के ना होने की कितनी प्रोबेबिलिटी है, 1 - 1/13, दैट इज 12/13, है ना। किंग के होने का और किंग के ना होने का, यही तो है प्रोबेबिलिटी। Probability of happening of event and probability of non-occurrence of that event will be sum as 1. I'm using here. I am actually using this parts here. And yeah, समझ में आ रहा है मेरी बातों को? What I am trying to say. These are the things that what actually I want to say here. कि यही हो रहा है चीज. So here will be like now what the question is कि if a card is drawn from a pack of 52 cards, मतलब अगर अपन 52 कार्ड्स में जो भी डेक है उसमें से अगर एक कार्ड निकालते हैं, एक कार्ड निकालते हैं ना, तो क्या हो रहा है कि ऑड्स इन फेवर क्या होगा कि वो कार्ड कितने, बेसिकली ऑड्स इन फेवर का क्या होती है सीन, ऑड्स इन फेवर होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ दैट इवेंट बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन अकरेंस ऑफ दैट इवेंट, है नहीं है, यही एक्चुअली यही होता है ना। सो द थिंग्स इज की किंग के होने का और किंग के ना होने की कितनी प्रोबेबिलिटी है, उस पे बहुत ज्यादा चीजें डिपेंड कर रही है। आई थिंक दिस थिंग विल बी क्लियर टू यू। ओके, आई थॉट दिस थिंग वर क्लियर टू यू। वन मोर थिंग आई वांट टू से हियर इज कि वी कैन डू वन मोर थिंग हियर, जिससे तो ओके द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ इवेंट इज कितना है, मतलब किंग तो टोटल 4 ही है ना, तो किंग के होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 4/52, दैट मीन्स 1/13 जो हमने निकाला था। तो राइट इट हियर 1/13, एंड ना होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, जो ना होने की प्रोबेबिलिटी है विच इज 12/13। सो ओवरऑल आवर 1/12 is the odds in favor. I hope this will be clear to all of you. So this is actually the problem that we have to look through it कि कैसे चीजों को सॉल्व करनी है नहीं करनी है, and that will be fine. यहाँ तक चीजें तो समझ में आएंगी होंगी क्योंकि कुछ हमने एक्स्ट्रा अभी तक करा ही नहीं है। एंड ओके, so we can do one more thing is okay, so now let's move on to the next part actually. So let me take the another example here. The next example is something it will be, wait, let me take the example here. It will be something we're defining, we have to learn a new concept here. Okay, so let me define a new concept here, which is actually is compound event. We are going to learn our first new thing, then we will discuss to the problem. Okay, the things is compound event. आज हमने क्या क्या पढ़ा, complementary event देख लिया, and now the new topic is compound event. So what is compound event is actually is, so the combination of two or more than two event, combinations of two or more than is actually known as compound event. क्या होती है, combination of two or more than two event will be compound event. We can do one more thing here is something like, देखो अब ऐसा हो रहा है ना कि मैंने अगर तुमसे क्वेश्चन कहा कि टेल मी द प्रोबेबिलिटी ऑफ, जैसे मैंने एक डेक की एग्जांपल लेते हैं, लेट अस सपोज दैट कि वी आर टेकिंग एन एग्जांपल कि हमने एक कार्ड ड्रॉन करा
ठीक है, हमने क्या किया, हमने कार्ड को ड्रॉन किया, एंड कार्ड कुछ इस तरीके से बेसिकली ड्रॉन कर रहे हैं कि हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ अक्रेंस ऑफ किंग ऑफ रेड कार्ड, या फिर कुछ ऐसा हो सकता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ अक्रेंस ऑफ आइदर किंग और क्वीन, है ना। इस तरीके की चीजें अगर अपन यूज कर रहे होते हैं, अगर कि कहीं भी प्रॉब्लम में, लाइक look let me write it here, like the probability of happening will be case like either or, neither nor, जैसे हमने बात करी है कि आइदर और, आइदर किंग और क्वीन, या फिर ऐसा कर सकते हैं नाइदर एस नॉर जैक, है ना, ऐसा कुछ भी। तो ये क्या होना कि दो इवेंट साथ में हो रही है, कॉम्बिनेशंस की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, कॉम्बिनेशंस हो गया ना, हम ऐसा नहीं कह रहे कि एक किंग, एक बार हमने डेक को मतलब एक कार्ड ड्रॉ किया, एंड आई एम नॉट सेइंग कि क्या होनी चाहिए, ये एक क्या उसको बोलते हैं, किंग होनी चाहिए। आई एम सेइंग कि ना तो किंग होना चाहिए ना तो क्वीन होनी चाहिए। तो यहाँ पे टू और मोर इवेंट एक साथ हो रहे हैं, सो दिस इवेंट विल बी कॉल्ड एज कंपाउंड इवेंट। तो ये दो तरीके का होता है। द फर्स्ट इज लाइक ए ऑफ ए इंटरसेक्शन ऑफ बी, okay, A intersection of B, so the both events A and B occur simultaneously is actually called as मतलब दोनों इवेंट अगर साथ में हो रहा है तो उसको बोलते हैं बेसिकली आइदर एंड और विल बी केस्ड एज, एंड आइदर नॉर विल बी केस्ड एज। मैं बताऊंगा, इसमें चीजें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, तो अगर दो इवेंट साथ में हो रहा है सो इट विल बी कॉल्ड एज ए इंटरसेक्शन ऑफ बी। और अगर इसको वेन डायग्राम से समझाया जाए तो इट विल बी समथिंग लाइक दैट। दिस इज माय वेन डायग्राम, लेट अस सपोज दिस इज आवर ए एंड दिस इज आवर बी, and so this section will be I'm try to elaborate it with some Venn diagram. So this section will be our A intersection of B, so this section will be our A intersection of B. And if I talk about the second thing, which is at A union B, this symbol is, I think you all guys are familiar with, this is of intersection and this is of actually union, right? Very good. So this will be like at least one of event A और B, या तो A हो रहा होगा या तो B हो रहा होगा, एक बारी में कोई एक ही इवेंट हो रही होगी, है ना, दोनों साथ में नहीं हो रहा होगा। तो बेसिकली neither nor one case will be tends to A intersection of B, and union case will be tends to the which one exactly. So let me define its probability formula as well so we can understand it. So it will be like P, A intersection of B is equal to uh, uh, actually A intersection of B by total number of samples. So this is the actually formula that we have to read over. And in this section, what I'm trying to say is the probability of A union B is actually equal to at least एक बार में कोई एक ही काम हो रही होगी, at least one of the event A or B occur, and by total number of sample. And when we combine this both and 1 and 2, combine 1 and 2, so what we will get here, we will get probability of A union of B is actually equal to probability of A plus probability of B minus probability of A intersection of B. So these are the things that we get when we combine the equation 1 and 2. Oh, let me draw the Venn diagram of second one as well, so you can understand it in a well manner. So it will be something like this is our A and this is our B. This whole portion, this completely portion will be counted as A union of B. Not outside of that, just inside. Okay, so these are the things that you will have to remember the things. एक कंपाउंड इवेंट्स क्या थे, तो कंपाउंड इवेंट्स विल बी
कि या तो बोथ इवेंट वर अकर साइमल्टेनियसली, या तो देखो इस चीजों को ऐसे समझाया जा सकता है कि इफ आई एम ट्राइंग टू से यू कि अगर कोई दो इवेंट्स हो रहे हैं, जैसे ऐसे मैं बोल सकता हूँ कि लेट अस सपोज दैट यू आर एक्चुअली गोइंग टू स्कूल एंड देयर इज रेनिंग, ओके, एंड देयर इज रेनिंग, तो मैं अगर पूछता हूँ कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट व्हेन यू आर गोइंग टू स्कूल एंड देयर इज रेनिंग, है ना, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि अगर तुम स्कूल जा रहे हो जिस टाइम, उस टाइम एक्चुअली देयर इज रेनिंग। सो यहाँ पे दो इवेंट है, द फर्स्ट इज कि तुम स्कूल जा रहे हो, एंड द सेकेंड थिंग इज कि देयर इज रेनिंग। सो if the both if the both things were happening together, the things is कि अगर तुम स्कूल जा रहे हो एंड पानी पड़ रहा, that means that both the event will be occur simultaneously, and the second thing is कि अगर तुम स्कूल जा रहे हो और पानी नहीं पड़ रहा, that means there is happening at least one event, कम से कम एक इवेंट तो हो ही रहा ना, तुम स्कूल तो जा ही रहे हो, ठीक है। एंड द सेकेंड थिंग इज कि यू आर कि लाइक यू आर नॉट गोइंग टू स्कूल एंड देयर इज रेनिंग, ठीक है, तुम स्कूल नहीं जा रहे हो और यहाँ पानी पड़ रही है, तो दोनों इवेंट क्या है ना कि एक दूसरे के, बेसिकली कहने का मतलब है कि दो इवेंट साथ साथ में हो रही हो, देन दैट विल बी काउंटेड एज ए इंटरसेक्शन ऑफ बी। एंड अगर दोनों इवेंट, if the at least one of the event A or B occurs, then that will be accounted as क्या, it will be accounted as union. So this is the thing that you have to keep in mind, and properly आपको ये सारी चीजें लगानी आनी चाहिए, है ना। तो मैं आपको एक दो प्रॉब्लम से चीजें क्लियर करवा देता हूँ। लेट मी tell you something about the things. Okay. Okay, I think there is some technical glitch. So let me recall the something जो हमने अभी तक करी है। So हमने किस टॉपिक पे बात कर रहे थे? ओके, सो देयर विल बी लाइक कि कंपाउंड इवेंट्स की बात कर रहे थे, तो यहाँ पे दो इवेंट, तो हमने दो इवेंट पे बात करी थी कि या तो दोनों इवेंट एक साथ ही हो रहा हो, या फिर दोनों में से कोई एक इवेंट हो रहा हो, तो दैट विल बी द थिंग्स जो हमने बताया। So now it's time to take some problem so that we can understand what I'm trying to say. Let's take an example. So it will be something like it's based on a card actually. So what I'm trying to say here is key first thing. Okay, so the things is key there is a question which is based on compounds event, which is actually, so let me take it here. So find the probability of occurrence of neither king nor queen. So look at here, ना ही मेरे को किंग चाहिए ना ही मेरे को क्वीन चाहिए, मुझे इसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है कि नाइदर किंग नॉर क्वीन। तो वी कैन से वन थिंग कि ना किंग चाहिए ना क्वीन चाहिए, दैट मीन्स we can say कि वन माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग union queen, we can say that. So the king की होने की प्रोबेबिलिटी जो है वो क्या है, तो किंग की होने की जो प्रोबेबिलिटी, बिकॉज बोथ वर इंडिपेंडेंट इवेंट, किंग का होना एंड क्वीन की ना होना में कोई रिलेशंस नहीं है, ठीक है, बिकॉज बोथ वर इंडिपेंडेंट ना। तो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग, आई एम ट्राइंग टू से कि प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग यूनियन क्वीन, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग यूनियन क्वीन is actually equal to probability of occurrence of king plus probability of occurrence of queen minus 0, because it has no meaning, because both were independent event, है ना, एक का दूसरे से कोई लेना देना ही नहीं है। तो what I'm trying to say is कि so the probability of k, so the probability of k will be actually equal to the probability of happening of king will be, look at here, there will be again I'm trying to say red card, black card, heart, diamond, spades,
club. 13 cards, everyone has 13 cards, king, queen, jack, and all. So king has 4 cards, everyone has one king card, and everyone has one queen card as well. So what I'm trying to say here is the probability of occurrence of king will be 4 by 52, and it's also will be 4 by 52. So it will be 8 by 52. It will be 2 by 13. So what we have to find here is probability of non-occurrence of king and queen. So it will be equal to 1 minus probability of occurrence of king and queen. So it will be equal to 1 minus 2 by 13. So it will be equal to 11 by 13. So this is the actually the final answer that we have to go through it. ठीक है, तो बस इसमें ध्यान ही रखनी है कि कंपाउंड्स इवेंट्स में कि ए एंड बी साइमल्टेनियसली हो रहा है तो दैट विल बी कंपाउंड इवेंट, एंड ए यूनियन बी, अगर ए यूनियन बी मतलब दोनों में से कोई एक, तो दैट विल बी काउंटेड एज आल्सो कंपाउंड इवेंट, जिसकी फॉर्मूला जो थी वो नेक्स्ट है, जैसे कि मैंने दे रखी है नीचे, which will be equal to P inter P what I'm trying to say is probability of A intersection B is whatever it is. Okay. So the probability of A intersection B will be something counted as the sample space of A intersection of B divided by the total sample space. Okay. So that will be counted as in the same order. तो ये सारी चीजें थी जो आज हमने डिस्कस करी, बेसिकली बेस्ड ऑन कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट, कंपाउंड्स इवेंट. सो ये सारे कुछ कुछ इवेंट्स हैं जिसपे हमने डिस्कस करी एंड उसके प्रॉब्लम भी साथ में करते गए. सो कंपाउंड इवेंट पे हमने प्रॉब्लम करी कि कैसे होता है. इट विल बी इन द केस लाइक आइदर एंड और, जो मैंने आपको पहले एग्जांपल दिया था कि इफ आई एम गोइंग टू स्कूल एंड देयर इज रेनिंग, तो यहाँ पे 2 इवेंट्स हो रही हैं, मैं स्कूल जा भी रहा हूँ और वर्षा भी हो रही है. ठीक है, तो इसके भी like दोनों इवेंट साथ में हो रहे हैं, so that will be counted as A intersection B. If but both were independent, it will be fine, but both will be counted as A intersection of B. या फिर सेकंड एग्जांपल ऐसा कह सकते हैं कि if we are taking a king, अगर एक कार्ड को ड्रॉन करते हैं, so what are the probability of getting the king of the red card? Because देखो टोटल 4 कार्ड, बेसिकली 2 तरह के कार्ड होते हैं, ब्लैक कार्ड एंड रेड कार्ड. And black card has 2 types of cards. Like basically one is spades and other is club. And the basically red card has 2 types of card, heart and the diamond. So what I'm trying to say here is ki if I ask you ki what is the probability if I draw a card, so what is the probability of getting a king of red card? So there is 2 event. हमें सिर्फ किंग नहीं चाहिए, किंग की आने की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो होगी 1 by 52, बिकॉज देयर वर 4 कार्ड ऑफ द किंग एंड देयर वर टोटल नंबर ऑफ सैंपल इज 52. बट मैं क्या बोल रहा हूँ कि मुझे सिर्फ किंग कार्ड नहीं चाहिए, मुझे उसकी प्रोबेबिलिटी बताओ कि किंग कार्ड फ्रॉम रेड कार्ड, किंग फ्रॉम द रेड कार्ड्स होनी चाहिए. तो अब रेड कार्ड में कितनी सारी किंग्स होती हैं? 2, वन फ्रॉम हार्ट एंड अदर फ्रॉम द डायमंड. सो ये सारी चीजें जो है ना कंपाउंड्स इवेंट्स के पार्ट आते हैं. सो यू हैव टू कीप दिस थिंग इन माइंड एंड okay, so that's all for today. In tomorrow's lecture we are gonna deal with some mutually exclusive event. देखो यहाँ पे हम लोग कर क्या रहे हैं ना, we are just discussing the events. हमने पहला बेसिकली ये होता क्या है, ये एक्चुअली होता है सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस जो हमने फर्स्ट क्लास में डिस्कस करी थी. फिर कल के क्लास में हमने कुछ इवेंट्स डिस्कस करे, आज की क्लास में हमने कॉम्प्लीमेंट्री, उसके बाद कंपाउंड, है ना. ऐसे बहुत सारी बेसिकली इवेंट्स होते हैं. दूसरा होता है इंडिपेंडेंट, फिर होता है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव. सो ये सारी टर्म है, ठीक है, जो आपको धीरे धीरे सीख जाओगे, क्योंकि ये और इसको समझना ज्यादा टफ नहीं है. क्योंकि देखो कॉम्प्लीमेंट्री तुम्हें याद भी रखना है, क्योंकि इसका हिंदी क्या होता है? पूरक. दैट मीन्स एक का होना दूसरे के ना होने के इक्वल है. दैट मीन्स एक इवेंट की होने की प्रोबेबिलिटी दूसरे इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी इक्वल है. दैट विल बी कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट. कंपाउंड इवेंट में क्या होता है? अगर 2 इवेंट एक साथ हो रही हैं, सो दैट विल बी ऑफ द केस ए इंटरसेक्शन ऑफ बी. अगर 2 इवेंट हो रही हैं, दोनों में से कोई एक इवेंट हो रहा है, सो दैट विल बी case of A union of B, so that will be counted as the compound event. Same as we will deal with some in next class we will deal with these 2 events.
which is one is independent event and other one is mutually exclusive और exhaustive event. So ये सारी चीजें जो है ना बेसिकली इवेंट पे डिस्कशन हो रही हैं कि किस किस तरीके की रियल लाइफ में प्रॉब्लम आ सकती है. ठीक है. तो द थिंग्स इज की ये सब बेसिकली केसेस हैं. तो आपको बस केसेस की तरह ही इसको देखनी है और चीजें तो एनालाइज हो जाती है. ओके. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. इन टुमारो क्लास वी विल डील विद सम more types of events. Okay, thank you.